Hello and welcome to the Oak Tree Dugout. We are coming to you live from the Oak Tree Studios in downtown Mumbai. And we have the auction Hangout special today, along with some of my friends at Oak Tree. We've got Ajinkya, we've got Shishir, and you can put them up on screen, guys. And we've got a special guest, Gaurav Kapur, past master of auctions, used to crores of rupees being traded on a given day. डेली Hello, बेसिस Gaurav. डेली बेसिस लाखों में तो भाई आपको बात करता ही रोज नहीं का है काम है, रोज का काम है। लाखों में तो बात करता ही नहीं है, सिर्फ करोड़ों में ही बात करते हैं। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी जस्ट सेइंग 5 10 12 करोड़, आप लोग खुद समझ लेना। करोड़ में भी 7 जीरो होते हैं ना, थला फॉर अ रीजन। हाँ, नाइस। थाला फॉर अ रीजन। अजिंक्य आज 2 महीने में दूसरी बार मिला गया, इंडिया की शर्ट पहन के बैठा है। मैं वो सोचा आज कि इस 19 बार है ना, 19 तारीख को 19 पहनूंगा है, मैं, आज तो 19 है। डोंट शायद फॉरगेट, आज किस्मत बदल 19 है। जाए। हाँ, रुको, आप लोग सब एक दूसरे के ऊपर बात करोगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। नहीं, हाँ। अंकल आए हैं सब सिखाने सबको, बच्चों को, ठीक है? बताओ सर। हाथ खड़ा करके बोलो। सर, मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। कि आज 19 है, 1 महीने बाद आज वापस कोशिश करेंगे कि आज इंडिया की जीत हो। अजिंक्य 19 तारीख को दूसरी बार लगातार आप खाली हाथ जाने वाले हैं आज जर्सी पहन के। चलो आज कोशिश करेंगे। एक अजिंक्य तो मगर, सीएसके के लिए खेल रहा है। अच्छा, मगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। 10 टीमें हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं। 173 प्लेयर्स टोटल उनके स्क्वाड्स में हैं। दैट मींस 77 स्लॉट्स नीड टू बी फिल्ड। और जैसे इंडिया में जॉब वैकेंसीज में रिजर्वेशन कोटा है, तो उसमें लगभग 40% यानी कि 30 प्लेयर रिजर्व्ड हैं ओवरसीज स्लॉट्स के लिए। जीके सबसे ज्यादा केकेआर के पास भरने के लिए हैं 12 स्लॉट्स। शुड वी स्टार्ट विद चेकिंग हाउ कि सबके कितने पर्स हैं, कितने। एक काम करते हैं, सबकी टीमें चेक करते हैं। अब अपना जरा माइक थोड़ा सामने लाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ, माइक थोड़ा सामने लाओ। सब एक बार लगा दो यार ग्राफिक ऑफ कौन सी टीम है और कितने। अभी लगा रहे हैं। दिखाओ भाई कौन कितनी शॉपिंग करने के लिए जा रहा है। आई जस्ट टेक्स्टेड सुंदर बिकॉज़ ही इज गोइंग टू बी ऑन द चेन्नई टेबल ना। तो मैंने सुंदर को मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई हैप्पी शॉपिंग डे, और मैंने कार्ट लगा दिया उसके आगे। पर यू नो उनका क्या होता है, राइट? उनका, मेरे को चेन्नई की बाइंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी लगती है। आराम से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, सडनली किसी प्लेयर पे ठक ठक ठक, वो ना माहौल पे नहीं जाते। कभी कभी बाकी टीमों का लगता है कि वो थोड़ा माहौल पे जा रहे हैं, दैट दे यू नो इट्स अ गेम, दे गोना गो। दीस गाइज आई लाइक दैट दे डोंट केयर वेदर इट्स वो मार्की प्रोडक्ट के, मतलब उसका स्टॉक कभी हाई है कि स्टॉक कभी डाउन है। They have decided who they want for what role, and they will just go after that person, and then they will extract the performance because they have the master extractor over there. But as we can see over here, the interesting one for me is the people who eroded their purse at the last minute, which is Bangalore, and them eroding their purse at the last minute by 17 crores allowed the most talked about thing to happen, which was Hardik going from Gujarat to Mumbai. Right? So that's what has happened, which has compromised them a little bit in this auction, because now they're going with 23. Otherwise, they would have been going very clearly with the maximum purse. Right? 40. Yeah. But they also need only 6 players. I mean, along with Chennai. So the trouble that I have with Bangalore, you know, the trouble I'm having is, again, they've got a top 4, but they've eroded their bowling. तो उनकी बॉलर कहाँ है? And Ajay Jadeja always says, and he's coming later, and he always says, batters win you games, bowlers win you championships. So I'm worried again about Bangalore about this same thing. RCB के बॉलर कहाँ हैं? तो आज उन्हें खरीदने पड़ेंगे, पर पैसे हैं नहीं उनके पास इतने। 23 करोड़ है, तो कहीं किसी का साथ जम गया। आई थिंक उन्होंने रैंडम जनरेटर लगाया और H अल्फाबेट से जो आया उसको सबको हटा दिया। है ना? H is gone. हेजलवुड, हसरंगा, हर्षल और कौन थे? हेजलवुड, हसरंगा। हाइड्रोजन से कोई प्रॉब्लम है उनको क्या?
क्योंकि एज But से हर्षल हाउसैक भी होता है ना, तो बॉलर का चाहिए उनको एज वाला जो महान हाउसैक बात है हर्षल साहिल, महान बात, हर्षल बड़ी को बात। वापस ले भी सकते हैं ऑन द चीपर प्राइस, अगर उनके पीछे कोई ज्यादा नहीं गया तो, अगर वही स्ट्रेटेजी होगी उनकी तो। एक बात बताऊं, मैंने हम्म नोटिस किया है कि हम्म कई लोगों ने ये टोटका लगाया पहले, ठीक है, कि हमने थोड़ा ना, लेट्स बी क्लेवर, अपना पर्स थोड़ा कम, थोड़ा बढ़ा देंगे, वी कैन ट्राई टू बाय दिस प्लेयर बैक चीप। आई हम्म डोंट थिंक इट्स एवर वर्कड। इट्स एवर वर्क। ओके यस, या आई थिंक बिकॉज उनटकट के केस में हुआ है ऐसा, जब नटकट के केस में आई थिंक तीसरी बार हुआ। हाँ 2 बार जब नहीं वो हुआ, तीसरी बार। 2 बार नहीं हुआ, या राइट। या बट सी हाँ क्या होता एक्चुअली है ना 3 बार कि ये तो एक मिनी ऑक्शन का ना डायनामिक भी काफी अलग होता है, या स्पेशली जब अगले साल पोटेंशियली एक मेजर ऑक्शन हो। तो अभी क्या टीम कर रही है ना, सारी टीमें, दे आर मतलब दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक स्किल सेट्स कि हमें बस ये चाहिए, राइट। या तो जो प्राइसिंग हो जाती है ना, वो काफी वेरिएबल हो जाती है बेस्ड ऑन वो स्किल सेट के प्लेयर्स प्लेंटीफुल हैं कि स्कैर्स हैं। तो जैसे है नहीं कि भाई, फॉर जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल, यू आर सो राइट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यू आर सो राइट, फॉर एग्जांपल इंडियन पेस बॉलर्स, इंडियन पेस बॉलर्स विद एक्सपीरियंस, या मेरे ख्याल से 3 है, who have handled pressure situations: Umesh Yadav, Harshal Patel, and शार्दुल। Shardul शार्दुल, Thakur. या Right? I can't या think of readily of anybody more. But for example, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, एक्चुअली कैप्ड ओवरसीज बॉलिंग ऑलराउंडर्स, लाइक जो नंबर 8 पे बैटिंग कर लें, बट इसेंशियली फास्ट बॉलर है, राइट। तो अभी रीसेंसी बायस या हॉट वैल्यू के लिए जेरल कुडजे, कमिन, स्टार्क, these will be the 3 names you'll expect. बट आई वेंट थ्रू द लिस्ट एंड भतेरे हैं। मतलब अगर आप, इफ यू काउंट डेविड विली, आई एम जस्ट गोइंग इंग्लैंड में, डेविड विली, क्रिस वोक्स, टॉम करन, जेमी ओवरटन, ऑस्ट्रेलिया में देयर डैनियल सैम्स, देयर शॉन एबर्ट, साउथ अफ्रीकन हैं वियान मल्डर, प्रिटोरियस, जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ, एक वो अभी डेब्यू किया था एक मैथ्यू फोर्ड ने, who मैथ्यू showed फोर्ड that he's a ऑस्ट्रेलियन है one day में, कीमो पॉल, या I'm a good fan of कीमो पॉल and he's, I think he's still young. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि हो सकता है कि सम टीम्स विल से अच्छा इन तीनों को जाने दो, वी विल गेट द अदर्स एट अ वेरी लो प्राइस, बिकॉज बहुत सारे हैं, राइट। सिमिलरली जो हमने आज सुबह डिस्कस किया था कि जो अनकैप्ड ऑलराउंडर इंडियंस का सेट है, जो एक सेट है, उसमें काफी बड़ा है। 67 प्लेयर्स हैं गौरव, 67 है 67। व्हाट? इट्स क्वाइट, यस, हाँ अनकैप्ड और इंडियन ऑलराउंडर्स, उसमें आप बता रहे थे कि पेस ऑलराउंडर्स जो हैं, पेस ये बॉलिंग मोस्टली पेस वो ऑलराउंडर्स। बहुत ऑलराउंडर्स सारे हैं, हैं। मतलब जो नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग कर लेंगे, और बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी के जो हैं, and I'm saying batting all-rounder तो अलग नंबर 1, this I'm saying essentially number 8 batters, 67? जो 67 Yeah. Indian uncapped all-rounders। यार एक सारी टाइम ये डिस्कशन होती रहती है कि अरे ऑलराउंडर कहाँ है, इंडिया में ऑलराउंडर नहीं बन रहे, हाँ। इम्पैक्ट रूल आए, इम्पैक्ट प्लेयर है तो फिर ऑलराउंडर को इंसेंटिव नहीं है आने का, बिकॉज टीम्स डोंट वांट टू डेवलप ऑलराउंडर्स बिकॉज यू हैव इम्पैक्ट प्लेयर रूल, राइट, यू कैन गेट एन एडिशनल बॉलर इन, so but I'm quite surprised, I knew it was a decent number, I didn't realize it was 67. अगर 67 That's one में list, से there are 2 lists, एक में 9 है, हाँ। एक में 67। 9 में बेसिकली थोड़े सीनियर वाले हैं, जिसमें I can't remember the names, like Jalaj Saxena, who have kind of been in the IPL around, ऋषि धवन, Raj Bawa, Rishi Dhawan is already he's part of Punjab, but Raj Bawa, या they ऐसे didn't नाम release. है थोड़े से, who are known names at least, even though they are uncapped, बट एक पूरा 67 का लिस्ट है, उसमें अब डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब होता है ना गौरव, ये पूरा। Yeah. तो बट मेरा एक डाउट है, सो आई हैव अ हम्म। क्वेश्चन फॉर गौरव, कि ये जो मिनी ऑक्शन होता है, उसमें व्हाई प्लेयर्स गो फॉर अ हायर प्राइस एंड नॉट इन मेगा ऑक्शन, कैन यू क्लैरिफाई दैट, कि ये ऐसा क्यों होता है? So the purse to player proportion per capita income is higher here, right? ओके। आपके पास 90 करोड़ होते हैं और इस आप साल 100 है 100 शायद, अब इस 100 बार है 100 करोड़, 90 100 करोड़, 100 करोड़ होते हैं और आपको 25 प्लेयर खरीदने, राइट। या अब आपके पास 25-30 करोड़ है और आपको सिर्फ 4 प्लेयर चाहिए, राइट। तो क्या होता है कि द वन प्लेयर दैट यू रियली वांट और यू रियली नीड, because you have everything else covered in your mega auction, right? Also in the mega auction, more slots, lesser money, right? If you think per slot money that's available from your purse, 4 CR. it's lesser, right? Here it's more. You have more money per slot
to spend Yeah. in the little auction. And in this, there you're trying to make your whole team 1 से 11, 1 से 12 आप बना रहे हो, बैकअप बना रहे हो. अब आपकी टीम एक सीजन 2 सीजन खेल चुकी है. So you know that you only need, आपको एक ये स्लॉट चाहिए यार, ये मिल जाए ना मेरे को तो अनलॉक हो जाएगा. Right? My level up. And now you have this much money, so you can really go after that player. Right? You can go, so your speed governor is far extended here. You don't, when you're in the mega auction, you're like, यार इससे ज्यादा नहीं खर्च सकता, नहीं तो मेरे को 10 प्लेयर और खरीदने हैं ना, मेरे पैसे वहां खत्म हो जाएंगे. डर लगता है आपको. The fear. Here the fear is not there because I have to go after this player. So if I finish my entire purse like Mumbai did last year, if you remember, Mumbai when going after Cameron Green, I remember people watching going, whoa, what are you guys doing? You have no money left. And they had no money left in the end, right? But they went after that player, one player. But if they still had to buy 10 more players, they would have stopped perhaps 5-6 crores earlier. So that's, I believe, the reason that you have more money and lesser slots to fill. देखो प्राइसिंग का ना वेरिएबल्स 3-4 हैं. एक है कि एज आई सेड अर्लियर सप्लाई कितना है, ठीक है. एक है डिमांड कितना है. लाइक फॉर एग्जांपल आई फील आई वाज गोइंग थ्रू द टीम्स कि मोस्ट स्क्वाड्स हैव 3 to 4 प्लेयर्स हु कैन ओपन इन देयर ऑलरेडी इन देयर 17-19, ठीक है. या फिर मतलब पंजाब फॉर एग्जांपल आई थिंक हैज 4 ओपनर्स, मतलब जॉनी बेस्टो विल हैव टू बैट एट नंबर 4, राइट. मेनी टीम्स विल लुक एट सेइंग अच्छा अपना नंबर 3 को भी ओपनर बना सकते हैं. Let's say DC has Mitchell Marsh. If required, he can open. Sai Sudarshan, जो GT के लिए number 3 पे खेला था, he is now an India opener, right? Yeah. So true. I don't see in this, मतलब demand wise, I don't see openers का demand personally, right? So एक दो टीमों को चाहिए, जैसे एक overseas openers, you know, जैसे Travis Head हो गया या कुछ ऐसा, you know, which again comes from a recency bias also. कि Travis Head's price will be inflated because of what World you know, Cup exploits, right? अभी पिछले कुछ दिनों में इसका परफॉर्मेंस आया है, so therefore you know he's hot in demand. रचिन रविंद्रा हो गए, you know, फिल सॉल्ट हो गया. काफी फर्क पड़ता है ना ये रीसेंट परफॉर्मेंस का. बट इवन दो वो अलग फॉर्मेट में आया है. नहीं, पिछले साल हमारे ऑल टाइम हाईएस्ट जो गया है सैम करन गया है प्योरली बिकॉज एक महीने पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20, या ठीक है ना. तो कितना मतलब आई थिंक 18 पॉइंट कुछ था, 18 पॉइंट समथिंग, 18.5. Would he get it this year? Maybe not. Yeah. I think, you know what, Tom Curran, by the way, Tom Curran's been bowling very well in the Big Bash. Yes. But what they noticed with Sam Curran and probably with Tom Curran as well, that the conditions in India perhaps are not conducive for them to get the best out of their bowling, right? Maybe the same with Tom Curran, but I think that's what happened with Sam Curran as well. It's also about usage. I feel like it, and we know this in cricket, what a captain does with a player is also so important. And I was quite surprised because Chennai and MS Dhoni showed a great liking for Sam Curran, but they didn't go after him in in the last auction. So they didn't retain him. So I was quite surprised because I thought that MS was, you know, if you notice, he sent him to bat at number 3 a few times as well, right? तो ये भी हुआ था, पर बड़ा डिपेंड करता है कि कौन सा कप्तान आ रहा है. कप्तानों की बात करें तो ऋषभ पंत is going to be at the auction, which I think is very cool. I'm so happy to see him back. Yeah. If I I'm just not saw wrong, him and Langer. It's the first time a captain and a coach will be at the auction, because I think Ricky Ponting, I somewhere on social media I saw it that Ricky Ponting is also there because he's not on Big Bash commentary. He's gone to attend. Yeah, the Ricky Ponting is here. Yeah, Ricky Ponting is in. So that's quite something, Gaurav. I don't remember ever having seen this in 15 years of auctions. Yeah, you're right. I'm just thinking, I remember Gautam Gambhir being there once, but I've forgotten whether It was might have been for KKR time. For KKR, yeah. I think later stages में आया था वो एक बार. कहीं तो था. Usually नहीं होता है. It's quite something for a captain and yeah, coach. I think it's great. Even if it's symbolic, right? I think even if it's symbolic, I like the idea of Rishabh being there. I think that the boy has been through a lot. I think he's a phenomenal talent. Yeah. And I'd be happy to see him on the field again. बहुत ही बढ़िया लड़का है और जनरेशन. कमेंटेटर भी अच्छा है behind the stumps. कमेंटेटर नहीं है, एंटरटेनर है वो. हाँ. फुल एंटरटेनर है.
एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आज रिकी पॉन्टिंग ऑक्शन में, तो उन्होंने बोला जाओ शॉपिंग करो क्योंकि उनकी बर्थडे भी है आज। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पहले कभी किसी को बर्थडे पे ऑक्शन पे बिठाया गया है कि नहीं। सो यार तो आज बेसिकली रिकी पॉन्टिंग, आज दिल्ली जिस भी प्लेयर को खरीदेगी, रिकी पॉन्टिंग उसको घर ले जा सकता है। चल मेरे के साथ साथ में चल, तो 3 महीने मेरे साथ रहेगा, फिर हम वापस आएंगे मिड मार्च में। कुछ टीमों के देखें, आई वांट टू सी अ फ्यू टीम्स। आई थिंक सबसे Yeah, I पहले just want to give some numbers. I have some numbers for you. बताओ। 1166 players registered for this year's auction. Right. Ben Stokes, Joe Root, and Jofra Archer withdrew. Then there was a short list which was down to 333 players. 33 So 333 players are in the fray as options. 214 इंडियन है, 119 ओवरसीज प्लेयर है इसमें. No Kedar Jadhav, no Shakib Al Hasan. They are not in the shortlist. So that to me is a surprise. I went through twice to see if their names on there. 23 crore players at their base price of 2 crores, which is a big number. GT has the best remaining purse of 38.15. 17 is the youngest a player has been shortlisted. A guy called Kwena Mafaka from South Africa. 19-year-old Rehan Ahmed pulled out yesterday because he was told by ECB ki spend more time with your family. Yeah. And at 38, Mohammad Nabi, 39. 39? He's 39. Yeah. He's now the oldest player in the 2024 auction. That's it. I have these numbers. Let's go through the teams. Let's go through them in the order of last year's performance and see ki kaisa haal hai, kya kisko kya hai. First up is the tournament winner, CSK. Gaurav Kapur. So we put together a probable 12, including the impact player, and we think that they've kind of already got a potential squad. Now the question is, who would they be looking for options for? Because you've got a Thikshana in the bench for potentially Pathirana. So what are the slots they're looking to fill? Ambati Raidu retired. They don't have. That's what I'm saying. This team is just, they're always sorted. ना शोर मचाते हैं ना कुछ करते हैं. डिफेंडिंग चैंपियन है, ऐसा कुछ. और इनके ऑलरेडी बेंच पे लगे से तिक्षाना और हंगर केकर भी है. I'm a big fan of हंगर केकर. So perhaps a fast bowler. They might look for somebody like a middle order Shardul to come back in because Deepak Chahar has been off and on with injuries. Deepak Chahar is fine now. So Deepak Chahar will play this entire season, or at least given now. He's not been there because his father's unwell, and we know how close he is to his father. So that's why he opted out of this tour in the last game against Australia. I think last 2 games against Australia, he opted out to be with his father. So, but otherwise, I think that Deepak cover is for him, be, right? If at all a cover for him in case of injury issue, because he is but much like Hardik Pandya. Can I just add something? They'll do it if it's not exorbitant. Remember, they never pay exorbitant prices, right? So if they get Shardul at good value, Shardul, Harshal at 7 they'll probably to 8 get him back. Harshal would be very good on Chennai pitches. Harshal is very sharp, very smart. So they could get him. They don't have, see, if they need one thing which they don't need on their home surfaces, they need one thing. They don't have a tearaway fast bowler. Yeah. Right? Tushar? No, you're right. They don't need. Do they need one? And the thing is, at whose expense? But they have Hangar Kekar, right? Who's not tearaway. I mean, who's in the 135 to 140 on average. Isn't Hangar Kekar 140 plus? On the odd day, yeah. I mean, it's much like Siraj, right? So 140 कर लेता है, but on a consistent basis, I don't know. ठीक है, but मेरे को पता नहीं. I'd be very surprised if they make any headlines today. So एक चीज है गौरव कि might go for the. उनके पास पर्स भी काफी है. Again, you guys, I can't hear you. You're all talking over each other. Hang on. Sorry. One by one. हाँ, so I was saying कि when you talked about the per person per capita जो price होता है, तो CSK, I was just noticing CSK has one of the highest. It is more than 5 CR per player. So that is not going to be an issue. I think वो जो purse exhaustion वाली बात है. And because Raidu has retired, R. Ashwin, I remember, had said that they might go for Manish Pandey to fill that experienced middle order batter. With Chennai, the problem is never that whether they have enough money or not.
I just feel their philosophy is such that they more in the last couple of years we've seen them make some headlines with highest money spent. I mean, 2 साल पहले तक तो उन्होंने I think double digit buy भी नहीं करी थी auction में, right? वो single digit करोड़ में ही रहते थे. तो अब शायद वो, but while I'm talking about a mix between philosophy and need. They need at this point, I don't see in this list that they need anything, like they're gasping for anything, right? I don't see that. If at all they want, as I said, maybe tear away fast bowler. They have enough spinners. They have backup for spinners, right? They're not buying a spinner for sure. They've got enough all-rounders as well. Between Shivam Dube, Moeen Ali, Ravindra Jadeja, if at all Deepak Chahar, they have enough of those as well. So I wouldn't put it past them though, Gaurav, to go Yeah. for somebody like a Odean Smith, who's Daryl a Mitchell is a person who's coming up a lot with a lot of people. For Daryl Mitchell seems like a very Chennai kind of player as well, right? He just seems like that. No fuss, no crazy, no rock starish vibes, right? He seems like a Chennai player. But again, it's just my instinct. It's just my You don't know. Yeah. informed guess is that they would not. I don't think they'll make any headline. I'd be very surprised if they make any headlines today. Okay. Let's move on to Gujarat Titans, Yeah. who had, if at all, I mean, the most noticeable headline Yes. in terms of Yeah. the auction. So let's look at their squad and see what their gaps are. I mean, obviously, Hardik Pandya is a gap. I have a point before we go to GT. Mhm. CSK, I think वो उनका जो foreign player quota है, that is मतलब it's complete. I don't know how much they'll go for foreign players. Just Have put they that got back. any- They have 7 है ना, 7 foreign players होते हैं, 4 and 1 5 हैं, तो they can go for 2 foreign players. Also, they need a backup keeper also. मतलब Devin Conway है, Possibly, yeah. कॉन्वे है But यार, still. और कितने कीपर चाहिए इनको? इंडियन विकेट कीपर शायद एक जा सकते हैं वो, एक डोमेस्टिक इंडियन कीपर. Okay, let's look at Nothing. GT. बहुत ये, let's look at Yeah. Biggest gap and biggest purse. Interesting. इसका मेन तो वही है इनका Also- कि हार्दिक पांड्या का कैसे फिल करेंगे, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो उस तरह का इम्पैक्ट दे So सके. one thing I've noticed is that Vijay Shankar and Rahul Tewatia in the domestic season this year have been bowling a lot more. So obviously there you उनको go. indication दिया गया है कि bowling करो. So क्योंकि Tewatia in दोनों ने बॉल the नहीं डाली थी लास्ट आईपीएल में. हाँ ठीक है, और मतलब Vijay Shankar didn't do too well. Rahul Tewatia actually finished I think with 16-17 wickets in the Vijay Hazare, and he was very often bowling after the 40th over in the Vijay Hazare and bowling his quota many times and doing a good job. So that is one thing to look at, but they I still would need an change all-rounder. one thing in this. The one thing I would change is if Vijay Shankar is only a batter, then I would Yeah. prefer Abhinav Manohar playing in this 12 Mhm. as a batter. David Miller comes at 5, Abhinav comes at 6. We've seen Abhinav's finishing capabilities, big hitter. Yeah. Mhm. So you push him up, and the Indian player replacement for Vijay would be Abhinav if Vijay does not bowl. Right? Now we bring that team back, and you see they obviously would like to play Noor and Rashid together. Team lao, dekhne do. Team lao. Yeah. अब आपके पास अगर राशिद, नूर, शमी, मोहित है तो आप ऑब्वियसली एक पेस बॉलर ढूंढ रहे हैं, ठीक है? आप एक इंडियन क्विक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah. मेरे ख्याल As से Nandan अनकैप says- पे ढूंढेंगे. Nandan says there's Karthik Tyagi, Ishan Porel, Chetan Sakaria, these kind of players. चेतन सकारिया का तो वन सेक, चेतन सकारिया का तो एक्शन सस्पेक्ट हो गया है. Huh. So let's see. My other thing is that like a Saha, he's now playing only limited cricket, right? So Yeah. they would look for a backup to him as well. Backup keeper. Because Yeah. because he's now 39, 38, not playing that much. Can he Also, they let regularly go open? केएस So, भरत. यार इस साल तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस साल 14 out of 14 है साहा के लिए. साहा is going to be every game this year. फिर let's उसके see. बाद So अगले I साल would say देखेंगे. they might keep a backup in the bench, right? Somebody a young like a Again, headlines. Are you thinking they're doing headlines today?
I think they'll They need a might. Mohammad Shami backup as I well. think. I don't think they're going. I don't think there's any headlines you're getting here. They have a big purse. They could perhaps, but could they? Could they make headlines? They've got. I mean, they've got the Yeah, biggest yeah. purse, haven't they? Yeah. They've got a They have very the big biggest person. purse. Oh, Aniket has just sent a message saying that it was some other Chetan from Karnataka. Oh. Another Chetan Sakaria. No, Mistaken not the identity. Chetan Sakaria. Just the Another Chetan. Chetan. Just the Chetan. ये छोटा चेतन है. छोटा चेतन का जोक नीरव अजिंक्य और शिशिर को समझ नहीं आएगा बिकॉज नहीं बिल्कुल आएगा. आया. हाँ 3D पिक्चर थी बिल्कुल याद है. हाँ, क्यों नहीं आएगा? चिन्नारी चातन. हाँ, फर्स्ट 3D पिक्चर मैंने देखी है, थिएटर में देखे मैंने. छोटा चेतन. हाँ. अजिंक्य कितना छोटा चेतन हुआ होगा उस टाइम पे जब उसे छोटा चेतन. 80s में आई थी यार पिक्चर. नहीं 90s में रिलीज थी. अर्ली 90s में रिलीज थी. नहीं 80s में आई थी यार. नहीं ओए 80s में आई थी. रिलीज तो हुई थी 90s में थी थिएटर में, मेरे को याद है अच्छे नहीं, तरह. जैकी श्रॉफ का भी पिक्चर मैंने देखा था 80s में 3D. क्या नाम था वो पिक्चर का? मतलब वो त्रिशूल फेंकता था. शिवा का इंसाफ. शिवा का इंसाफ. अच्छा तो टाइम 80s हो गया में. आई गेस 80s में था. 1 बज गए हैं तो शायद. हाँ अभी दिखा. अच्छा शुरू होने वाला है. Let's move on to the अगला other. देखिए. We'll keep giving updates. पीछे की कौन-कौन आ गया है. Yeah. This is the most talked Mumbai Indians. team. So Gaurav, if you'll notice in their 12, they have only 2 overseas players. Piyush Chawla have force fitted. So they have the purse to only get, I would imagine, either they play Romario Shepherd, who's a good number 8, right? And then look for Indian spinners, Indian bowlers like Piyush Chawla का backup. नहीं यार इनके पास आकाश माधवाल है, बुमराह है, बेरेंडॉफ है, इनके पास हार्दिक बॉलिंग करेगा, राइट. इनकी बैटिंग तो बिल्कुल तगड़ी है. बैटर तो सोचो ही मत. मुझे लगता है इंटरनेशनल पेस बॉलर. Yeah, Pat Cummins, Mitchell Starc, so they can go for पेस बॉलर. ये बैंक तोड़ेंगे, ये आज बैंक तोड़ेंगे. कुछ करेंगे ये. 17.75 भी तो है इनके पास. सर ये 16 तक भी जा सकते हैं एक प्लेयर के पीछे. इन्होंने किया है पहले. एक बार कोई क्लियर कर देगा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइक प्लेयर्स यू हैव टू कीप इन द स्क्वाड. आई थिंक इज इट 18? 21. नहीं, पक्का. या मिनिमम है. They've got a minimum now. It's 20 or 21. देखना जरा. क्योंकि अगर वो है तो फिर इतना भी नहीं जा पाएंगे. एक मतलब बेसिकली 3 तो चाहिए उनको. एक मिनट नीरव. ये शिशिर पूछ किससे रहा है? हम इससे सवाल पूछते हैं, ये आउटसोर्स कर रहा है. कोई क्लियर कर दो कि कितने प्लेयर चाहिए. ये क्या चल रहा है ऑफिस में? ये सीरी से बोल रहा है. सीरी से बोल रहा है. मैं चेक. अच्छा 18 है. सो 18 है ऑफिशियल नंबर, द मिनिमम. या 18 मुझे आता है. यस. मैक्सिमम इज 25. तो ठीक है, उनके पास ऑलरेडी 18 आ गए. भाई एक नहीं 17 है. जियो पे 2 पार्थिव. मैंने कहा 2 पार्थिव पटेल बैठे हुए हैं यार. फिर मैंने रियलाइज किया एक ब्राउन पार्थिव है, एक व्हाइट पार्थिव है. एक माइक हैसन गोरा पार्थिव. I call him, by the way, when I meet him, I call him गोरा पार्थिव. He looks, it's quite crazy. हाँ देखा, किसी ने बोला है भाई हंगर केकर इज 145, 148. वो बहुत तेज बॉल डालता है यार. मुझे याद है उसके अंडर 19 से. मुझे लगता है एक अच्छा, बाय द वे आई आल्सो थिंक इफ कमिंस इज प्लेइंग, मेरे को लगता है कि कमिंस की अच्छी बोली लगनी चाहिए. कमिंस आपका बेस्ट नंबर 8 है यार. बट क्या वो लाइक इफ आई कंपेयर हिम विद मिचेल स्टार्क, राइट, T20 में तो मिचेल स्टार्क इज अ फार बेटर बॉलर इवन रिजल्ट्स वाइज एंड स्टैट्स वाइज. तो एंड ही इज आल्सो डिसेंट विद द बैट. बट एक मैं आता ही नहीं है यार वो. कैसे पता? If this bowling, Gaurav, but if this batting lineup needs a number 8 batsman, तो फिर कोई नहीं बचा सकता ना फिर इनको. Actually, you're right. 5 बंदे में फॉर्म में से जाएं. Look at this यार. Look at this top 7. You're right. They could completely go for. Okay. This is my call. Am I bidding big for Mitchell Starc? I have another pick. Yes. Hasaranga. They'll go for Hasaranga.
Big. Hasaranga, yes. Big. One I stop change my call. I agree with you. One of these three. Because They they could don't- go for both. They could go for Yeah. both and get only one. Yeah. Yeah. And But Hasaranga for sure. but the Ashish has got a point. Will Pollard is the bowling coach, batting coach. So there is history. Nets में कुछ लफड़ा ना हो जाए. Bhai, Andrew Simons and Bhaji have played in one team, Correct. right? Ponting and fine. Dada have played in the same team. Huh? Ponting and Dada have played in the same team. There you go. Shishant हो and जाता है. Bhaji have also, yeah, patched up. Hardik and all the MI players are playing in the same team. Yeah. One family. Nandan just said. Yeah. All did. There's a One lot of family. broken hearts and silence is golden messages coming from there. Yeah. That's going to be one to watch out for, man. I'm a little surprised with those messages. Then somebody's asking Naveen ul Haq for RCB. Naveen when? अब तो लेकिन वो पैचअप हो गया ना तो इतना टेंस नहीं होगा. लाइक जब हाँ. पैचअप नहीं होता और जाना पड़े तो ज्यादा भाई टेंस है. हो जाते हैं सब पैचअप हो Okay. जाते हैं. Shall we move on to the अगला next team? Next team. Yeah, I think that we should LLC. see. I think we should see the first two sets. Get people excited about the first two sets, The and auction take a has pick started, for yeah. who will be the No. and not take yet. a pick for who will be the highest out of that. Let's play Highest. that game. ठीक है? Sure. Come on. Getting the sets. Set 1. First set is for batter. Yeah. Oh. Is it visible? Yes. ऑल्सो इंटरेस्टिंगली एक मैं चीज बताऊंगा कि पहले 2-3 सेट में एक दो ही इंडियन बैटर्स है जिसमें वन इज मनीष पांडे एंड अदर वन इज करुण नायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यही है. हाँ, हाँ, यहीं पे. एक बार बताओ. वही दोनों. Actually, Okay. और Out of these 7, who's the highest out of these 7? Travis Head for me. Yeah, I'm going for Harry Brook because Harry Brook gives you the option now of a finisher as well. Because that's what he's doing for England. I'm going for Harry Brook as well. Travis Head, as I said earlier, I don't know how many people are looking for an overseas opener. So I think Rajasthan Royals will look because Butler के बाद फिर उनपे बैकअप में कुछ नहीं है इतना अच्छा ओपनिंग में. भैया बटलर Right. तो उनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका बैकअप नहीं ढूंढेंगे वो. नहीं उसका बैकअप नहीं बट समवन टू लाइक कभी जरूरत पड़े. और एक मेरे को लगता है डीसी भी देख सकते हैं उनके कि पास तो वार्नर 3 ओपनर है यार राजस्थान के पास. उनके पास जायसवाल, सैमसन और बटलर है. संजू भी है ना. हाँ, सैमसन Travis यूजुअली Head को. कहाँ ओपन करता है. सैमसन तो नीचे खेलता क्योंकि है. ओपनर है ना. वही तो मैं जो पहली बात बोला कि नंबर 3 को नंबर ओपनर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. बहुत टीमें करेंगी इस बार. तू देख ले, मतलब साई सुदर्शन ओपन करेगा जीटी के लिए. माय गट सेज. नहीं वो So I साहा think को कहाँ sir- खिलाएंगे यार. फिर वो साहा को खिलाने के लिए नहीं ओपन तो- कराना पड़ेगा आपको. हाँ. और फिर साहा आप is playing- सिचुएशन नहीं- के हिसाब से या तो विलियमसन को 3 पे भेजोगे या साई सुदर्शन को 3 पे भेजोगे. नहीं, मेरा ये है कि देखो, अगर साहा वर्क्स ग्रेट, नहीं तो साई सुदर्शन विल कम अप एंड पीछे मैथ्यू वेड आएगा एज अ फिनिशर, एज अ विकेट कीपर फिनिशर. सो दे कैन टॉस दिस अराउंड आल्सो, राइट? ओके, तो आप कह रहे हो कि अगर साहा नहीं खेलेगा, हाँ, अगर नहीं फिर चला, वेड खेलेगा विलियमसन की जगह. नहीं, आपके जॉश पास लिटिल. foreigner- देखो मिलर और राशिद तो आपके गिवन है. हाँ, ठीक है, फिर आप नूर को खिलाओगे, वो अच्छे फॉर्म में है. और विलियमसन. सो आई एम सेइंग जॉश लिटिल इज द ऑप्शन ना, तो दे माइट. तो जॉर्ज लिटिल और नूर का ऑप्शन हो जाता है ना. जॉश लेकिन लिटिल या नूर नूर सारे- डिपेंडिंग स्पिनर पेस बॉलर, तो फिर yeah, ऊपर विलियमसन exactly. की जगह ही रही ना वेड के लिए. करेक्ट. तो वो प्रॉब्लम है. अच्छा, इनमें ठीक है, हैरी ब्रूक मैंने बोला. शिशिर ने क्या बोला है? मैंने ट्रेविस हेड बोला है. मुझे लगता है क्योंकि रिसेंसी बायस Recency bias बहुत बड़ी चीज होती है. बहुत बड़ी बड़ी चीज चीज होती है. तो मेरा आई एम नॉट सेइंग इज द बेस्ट बाय बट ही माइट गो फॉर द हाईएस्ट अमंगस्ट So दीस. the two of you are saying, आई एम सेइंग ट्रेविस हेड. and Ajinkya? आई थिंक कोई इंडियन बैटर ज्यादा में जाएगा. आई थिंक थोड़ा वही नाम. मनीष पांडे. आई थिंक मनीष पांडे Manish will Pandey, go for highest out of these 7. नहीं रही. highest नहीं, but he'll go for good money. I don't know Highest. सवाल को समझो. highest. Either Travis or Harry. एक. Either of them. आइदर ट्रैविस और हेड. कहना क्या चाहते हो तुम? Harry. I said हैरी. एक सवाल का रायता फैला दिया अजिंक्य ने. by Travis God. Head. Travis Head, ठीक है. क्योंकि recency bias. चलो नेक्स्ट. सेट 2 दिखाओ. यहाँ पे असली माजरा है ना. ये Sorry, है, I'll have यहाँ to पे take this. बिकेंगे. I'll have to take Miraj rules. Thank you for the super
Super chat. Thank you. Powell, according to him, which is good option. Number 6 finisher. Some teams do need one. Power. A lot of teams need. Thank you so much, Miraj. Thanks, Miraj. Okay, Thanks for your let's super chat. see. एक मिनट नहीं रचिन दिख रहा है के शिशिर? courtesy. नहीं दिख रहा है सॉरी रचिन के जेरल courtesy. I think Kudzi. He'll get big amount of money. Kudzi. That's my pick in this set. Again, recency bias, right? Also, मेरे see, को the thing is, World Cup हाँ. में जिसने perform किया ना, they performed in India, so that will matter Yeah. in the recency. Yeah. You know, as opposed I to think it is going to be Rachin Ravindra या Pat Cummins में से, but mostly I'll go with Cummins. I think Kudzi. I am 100% sure Kudzi will get more amount than Pat Cummins. I don't मतलब this might be my fault, but I don't recall Kudze की batting at all. Like I don't know if he played anything in the World Cup noteworthy enough. he's a number 9. हाँ, Not then as I good as think Cummins or Stark. No way. So So- auction चालू हो गया guys. If you can yes. switch it on Mitchell? at your devices. Mitchell भी जा सकता है. for Daryl sure. Mitchell, number 4. But not for the kind of monies I expect for a Pat Cummins and Gerald Coetzee. Because fast bowler का again supply and demand ना. Recency bias plus supply and demand. So hellos and welcome. ठीक है, जेरल courtesy. मैं भी I am also going with him. Also Hasaranga is there. तो देखते हैं. Competition तो होगा. Again, Miraj comes in with saying Omar Zai will be a smart purchase. Yes, a number 4-5 batter who can bowl. अच्छा परफॉर्म किया उसने वर्ल्ड He कप did very well in the World Cup as well. Well, let's see. ये वाला set 2 is going to be very crucial for all the teams. तो सेट 1 तो आ गया भाई, मतलब हेलो एंड वेलकम स्पीच चल रहा है. चल रहा हेलो है. वेलकम में तो टाइम लगेगा. नेक्स्ट बताओ क्या है. So should we go beyond this or should we go back to the teams? नहीं देखो, एक और सेट 3 भी होगा. bowler का भी Set set कर three. लेते. Set 3 Set wicket three. keepers का है. Wicket keeper. विकेट कीपर है. So I expect Phil Salt here. Phil Salt. Yeah. Oos. Yeah. He not अभी stuff. सेंचुरी भी मारी है. केस भरत आई थिंक अनसोल्ड जाएगा. आई थिंक आई एम नॉट श्योर. नहीं अनसोल्ड तो मेरे को लगता नहीं, है 2-3 टीम है जिनको बैकअप विकेट कीपर चाहिए. चाहिए या इंक्लूडिंग गुजरात, बट उन्होंने रिलीज किया है. बट गुजरात, CSK, I think KKR if I'm not wrong. तो 2-3 टीमें हैं, है ना? We'll go through those. गाइस पहले ये देखो, कोई हमारे बड़े भाई अजय जडेजा बैठे किसी टेबल पे. वहां से लाइव करेंगे फ्रॉम द कोका-कोला अरीना. नहीं मुझे कह रहे हैं कि वो ही सेड कि वो दुबई में है. तो मैंने हाँ. कहा कि देखें तो. नहीं अभी दिखा नहीं रहा. अभी तक एक्चुअली दिखे मुझे नहीं. भी, मैं भी जा के बैठ सकता था वहां पे यार, सामने वाली जो सीटें लगी हैं. मैं तो कल तक दुबई में ही था. बट व्यूइंग डेक है ना इस बारी. व्यूइंग डेक मतलब में नहीं, पूरा- फ्रंट रो में. तुम्हारा भैया भाई व्यूइंग बहुत डेक में बड़ा- बैठेगा. नहीं आई एम जस्ट आस्किंग कि यहाँ पे इस बार व्यूइंग डेक दिखाया था. पता नहीं कि है कि नहीं है. बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, अरीना है, मतलब हाँ, प्रॉपर. बहुत ज्यादा. कोका कोला अरीना. डीसी में सौरव गांगुली तो दिख गया है, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली पंत नहीं दिखा. देखिए अभी दादा- कौन कौन आ रहा है. मार्क बाउचर इज देयर. अच्छा इस बार होस्ट भी राहुल सांघवी, रिकी पॉन्टिंग इज देयर. बट द बॉय. Yeah. यस. बड़ी लंबी ये जो रिकी पॉन्टिंग के बगल में बैठे हैं, इन पे बहुत मीम्स बनते हैं. बहुत मीम्स बनते हैं. कौन? Auction राहुल वाले. सांघवी? नहीं रिकी नहीं, पॉन्टिंग के बगल में जो दिल्ली में है ना, देयर इज दिस पर्सन हु इज GMR ऑलवेज देयर इन द वाला. ऑप्शन. किरण गांधी. किरण गांधी. शायद किरण गांधी. हाँ किरण. गंभीर जी गंभीरता से देखते हुए. देखें. सॉरी गाइस, मैं जरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं भाई वैभव, हम लाइव दिखा नहीं सकते, हमारे पास राइट्स नहीं है, बट हम लाइव देख सकते हैं और आपको बता सकते हैं क्या हो रहा है. अभी फिलहाल एक स्पीच हो रहा है, तो वी आर अभी कुछ गोइंग में भी टू लोग तालियां बजा रहे हैं. वेलकम, हेलो एंड वेलकम हो रहा है अभी. हेलो वेलकम. हेलो एंड वेलकम. हेलो. So shall we move on to team number 4, LSG? What is LSG looking at? 1 second. Let me get the LSG. Mohit, we'll give you all the updates. हैदराबाद वाले अपना बेटन लेके आए हैं इस बार, ये नहीं पैडल. हैदराबाद हैदराबाद में तो विटोरी पहले बैठा हुआ है. विटोरी बैठा है.
विटोरी बैठा है, काव्या मरान बैठी है और पहले मेगा ऑक्शन में तो वो पैडल ही भूल गए थे अपना। आई थिंक आधा दिन निकल गया था, बिड नहीं आई थी उनसे। कौन है, रुको। ठीक है, आई थिंक हाँ ऑक्शनियर आ गई हैं। हम्म, Yeah. This is the first Should time a we wait? female auctioneer is conducting the men's auction. Men's Yeah. auction. So LSG एक बार we'll go through LSG, and Gaurav, then thoughts? Do you think this is a fair? They traded in Devdutt Padikkal to bolster their top order. So I think मैंने कहीं पढ़ा था कि now KL Rahul will bat in the 4-5 zone position पे, इसलिए पडिक्कल को भी लिया है जिससे कि राहुल can claim also, like it will help his chances in the T20I for India as well. भाई कैप्टन है, वो खुद डिसाइड कर सकता है ना। हाँ मतलब तो but चालू हो गया। the thought process of bringing Padikkal was this only कि One राहुल second. को So फिर नीचे first name is खिलाएंगे। out. First और name अभी is out. गौतम गंभीर भी नहीं है जो उसको मना करेगा मनमानी से। अब लेकिन जस्टिन लैंगर है ना, Graphic नहीं दिखा another tough character. Best price. Roman Powell. Roman Powell. हाँ जी, पहला प्लेयर आ गया जी। रॉबमन है ना, रॉबमन पावल। Yeah. He's a Powell hitter. किसी का पैडल ओ गया एक। पावल के लिए राजस्थान लॉयल द बिड फॉर पावल। लगे हुए Talking like Shakti Kapoor now for the length of the auction. Are KKR. you Gaurav? I'm Gaurav Kapur. आपका गौरव कपूर। आपका प्याला तब ते दुलाला तब ते दिलुलू। शर्म आनी चाहिए। अच्छा भाई शुरू हो गई। And we're off to the races. लवी भाई भी आए हैं। किसी ने बोला कि केएल राहुल इज अ जनरेशनल प्लेयर, व्हाई विल ही गो डाउन? ये क्या है, आप लोग ने क्या बोला था अभी कि ही वोंट ओपन? So I had read somewhere that Right. KL Rahul is BCCI Okay, will so let's request- for this. Sorry. So Ashish, sorry to ask Ashish, where will KKR play Powell? In Eden Gardens. Ashish, the thing is that it's been rumored that BCCI and Indian team management will request Lucknow to play Rahul in the middle order to get him ready for the T20 World Cup, because there is a traffic jam at the top, and that Rahul can't open because there is too many players at the top. So, and they need players down in the middle. So they would need Rahul. If Rahul plays in the T20 World Cup, it can only be in the middle. Somebody saying Powell is Lascelles' backup. That's an expensive backup, man. Powell Where is did they going reach for right now? big money. Why is there no graphic? Shall we 4.4. shall we bring up KKR squad and just look at, because they have Yeah. 12 to fill. Lao. सबसे वैक्यूम सबसे ज्यादा बड़ा उनका और पास है। सबसे कम पर पर्सन प्राइस जो उनपे कैपेबिलिटी क्या बोलने की कोशिश कर रहा बेटा? क्या बोलने? कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में मैं कंफ्यूज हो गया यार, सॉरी। तो उनका भी वैक्यूम इज एट, मतलब unless they push up a 12 प्लेयर खरीदने हैं। Venkatesh Iyer to open, and then that slot opens up, या a foreigner slot there. That's an option. गुरबाज, जेसन रॉय, आपने तो गुरबाज चार है, यहाँ गुरबाज- ओवरसीज भर दिए। हाँ। इनके पास तो नहीं तो प्लेयर ही ऐसा नहीं है अगर भाई। जेसन रॉय को निकाल के या गुरबाज को निकाल के, if they put up Venkatesh Iyer to open, then a Powell fits in at 5. Yeah. That's the option. काफी पैसे मिल रहे हैं पाउल को। So Nandan, to चलो, answer your question, ग्राफिक क्यों नहीं आ रहा है इस पे? because नहीं, आई थिंक वो broadcasters are not as इंग्लिश efficient as we नहीं are. नहीं, सो उसका आंसर है इंग्लिश पे नहीं आ रहा है ग्राफिक्स, हिंदी हिंदी पे पे आ रहा मैंने है, टर्न हिंदी पे आ रहा चेंज किया, उस पे आ रहा है। हिंदी पे दिख रहा है। ये क्या हाँ, लॉजिक ऐसा है? क्यों? इंग्लिश पे नहीं आ रहा था। पता Right नहीं। discrimination? Because वो English भूल गए, graphics वो हम भूल कर रहे हैं। चलो हिंदी में देख के करते हैं फिर। हिंदी में देखो, हिंदी में। अच्छा, आ गया। 6.2 तक पहुंच गया। 6.25 पे 6.2 पहुंच गया ये, ठीक है। अच्छा, अब 6.25 पे डिस्कशन हो रही है इनकी।
Yeah, I am very happy that GG is और back oh with god, KKR. 6.4. 6.4. क्या 640. is he worth 640? 7 crore Yeah, ratio. Delhi So में तो Gaurav, this is another thing which I wanted to ask you. Was that the position in the auction where they come? Does that matter? हाँ. Like, Yes, and Hmm. how it ends much? up making a big difference. Hmm. Because it also, see, if your name comes up, let's say for example, First. let's say your name is coming up 7th, right? Mhm. And the first 6 players have all been bought. You may have been a viable option for 3 of those teams, Mhm. but now they won't bid for you, Yeah. Yeah. right? So immediately the demand for you has gone down. So therefore your price goes down as well. Correct. So that can happen. It can't be scientifically proven, right? But I think that it definitely matters, because if every team would have gone into the first set thinking of 3 players in their shortlist, because you always think, now this is my primary target, this is my secondary target, this is my third target that I'm going for. So if you get your primary or you get your secondary, you're not bidding for your third one. Na? But if you had not got your first 2, you're bidding hard for the third one. So it's very complicated to actually decode it. But the later you come, there will be lesser money available. That's just the truth, because players have already been Can picked it up. not go the other way as well? Can you It could. not also look at It could saying that you're that अच्छा desperate. यार You're right. अभी तो मतलब ये है, मगर सेट नंबर 6 में ऐसे 5 और हैं Yeah. whose base prices, and let these guys go for it right now, Yeah. exhaust their money. Yeah. I think in a regular auction this happens, what you're saying. I think in a mini auction So in a mein, mini auction, yeah, tough to. you But need, I mean, I don't know I actually still why feel KKR that the is bidding. positioning, I feel, even though it's random and it's draw of lots, I feel like it does. I have a doubt here कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ एक्स टीम, उन्हें पता है कि वाई टीम एक प्लेयर के लिए बहुत मतलब दे आर डेस्परेट फॉर अ सर्टेन प्लेयर, तो हाउ मच एक्स टीम कैन गो टू डिस्ट्रॉय द वाई टीम्स पोस्ट, लाइक फॉल्स बिडिंग करते हैं ऐसे, मतलब False मैं जा ही bidding रहा मतलब हूँ, अगर if it ends दूसरे at का you प्लान to do a, खराब करने के. हाँ दूसरे का प्लान खराब करने के लिए, कितना होता है ये? Gaurav Kapur, What? मतलब फॉल्स बिडिंग कितनी होती है कि सामने वाले की पर्स में काली कर दूं, बिल्कुल. कि मतलब वो कितने हद तक होता है वो, और कितना अफेक्ट करता है वो दोनों टीम को, और एक साथ गलती से वो जो जिनको खरीदना नहीं है वो खरीद ले, It's a फिर risk. उनको मिल जाए. It's a it's a risk. risk. I People have remember done कृणाल that. पांड्या के साथ हुआ था. कृणाल पांड्या जब अनकैप्ड आए थे 10 लाख पे, तो उनका आई थिंक ऑलमोस्ट 4.5 तक गया था, if I'm not Who wrong. got him then? Who got Powell finally? RR got him for 7.4 CR and just for context last year उनकी सैलरी थी 2.8 CR, तो बल्ले बल्ले Nice. हो गई पॉवेल की. Yeah. नहीं तो इस एक साल में भाई ने भी तो काम किया ना, हाँ मेहनत काम की है, किया है, कैप्टन काम बन किया, गया है, बिल्कुल तो बिल्कुल you बिल्कुल. can't But he was very susceptible to spin, I remember from the last season. which is why I'm very surprised he was going at very good graphics team. क्या बड़ी जल्दी काम कर दिया यार तुमने. हाँ. सुपर Keep it up, फास्ट. keep it up. अरे Super वाह. fast. So my question is, Gaurav, why was KKR bidding for him? राइली Because रूसो इज Riley अनसोल्ड. Russo is very unsold. राइली Just रूसो इज clearly अनसोल्ड. stopping. Powell does not enjoy spin bowling, Yeah. So hot favorite is and there. KKR is Harry definitely preparing a spinner's backyard. So Harry Brook is on the list now. Okay, so second, Robin Powell goes to Rajasthan Royals for 7.4 CR, Yes. and Riley Rousseau is the second of the 7 players in Unsold. the set who's gone unsold. Unsold. So we've got 5 left. Yeah, Harry Brook is up now. Harry Brook is up. Boli Base lagao. price of 2 CR. And कितना मिला था Rajasthan उन्हें? have 14 started bidding crore for ना? Harry Brook. कितना मिला था? राजस्थान को 14 जल्दी and a half. घर जाना है क्या? Rajasthan and DC are in a battle right now, I think. एक बार राजस्थान की टीम देख लेते हैं. राजस्थान का क्यों अपडेट इतना करके वो- बताओ भाई क्या सीन है. हाँ, एक सेकंड, अपडेट हो रहा है.
जो तेरे संग Harry Brook. Okay, guys, should we just watch the first two sets and then come back at 2 o'clock and do a little roundup? Sounds good. Let's come back Yeah. at 2. Let's do that. Um, Let's come back after the first two audience- sets are done. Okay. Excellent, guys. We'll be on another link at that point. So आप Yeah. please go. I request everybody subscribe कर लीजिए. Subscribe करेंगे तो notification immediately आ जाएगा. नहीं तो we will be back at 2 o'clock sharp, and we'll have one or two surprise guests for you. Yeah, on all social medias, guys. Facebook, X, YouTube. We'll be live here with another guest. And All right. See you, Gaurav. See you guys in a See bit. you, Shishir. See you. Bye, guys. Bye bye.